हमने पहला क्वेश्चन लिखा था why was औरंगजेब unpopular by the time of his death? रीजंस लिख ली थी सारी की सारी रीजंस लिखी थी। आधा किया ना, तीसरी रीजन बतानी थी, लिखो जी। Luxurious lifestyle. You're a newcomer. Where are you from? I mean, which school? You're private. Okay. Private. You are from Learning Alliance. Okay. So what question is this? Question number 2? Yes, it's question number 1 actually. The one reason that was remaining, so we are going to go with it. Wait, wasn't question Why number was 1 Aurangzeb unpopular by the time of his death? Number 1, Aurangzeb That's was question 2 unpopular said because of we the completed jizya tax question he 1. imposed. Reasons लिखवा रहा हूँ पहले, हाँ points लिखवा रहा हूँ, pointer दे रहा हूँ. Aurangzeb was unpopular by the time of his death because he reimposed jizya tax. ठीक है? Second, Aurangzeb banned sati, the old Hindu convention. ठीक है, बता चुका हूं. मॉडर्न टाइम्स आके ये इसने बैन की थी बाद में, लेकिन अभी औरंगजेब ने बैन कर दी. थर्ड, he built expensive mosque for himself called Pearl Mosque. जाहिर बात है किंग था, ठीक है. So luxurious lifestyle was the one because of which people got an impression that he was leading a luxurious lifestyle. इम्प्रेशन से आगे क्या है? जी फातिमा क्या कह रही हैं आप? इम्प्रेशन से आगे क्या है? People got an impression that he was leading a luxurious lifestyle and could not focus on the service of the people as he remained busy And could not focus on the service of the people as he remained busy for 25 constant years in the long costly wars which made the empire almost bankrupt. As a result, he even could not uplift his army. बस खत्म, ये रीजंस थी इसकी. अब कहते हो तो इसको डिटेल में लिखवा देता हूं. अगर इसी को सिर्फ बिल्ड देखोगे तो ये सारी जो रीजन लिखी हुई थी इनको 4-4 लाइनों में सिर्फ एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर बन जाता है. वैसे तो अभी आपको जो हैंड आउट आ रहा है उसमें मिल जाएगा आपको भी जी, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पे. इसी तरह फिर एक और क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का. वो आता है व्हाई वाज औरंगजेब्स सक्सेसर्स ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर. लिखें 7 मार्क्स का. व्हाई वाज औरंगजेब्स सक्सेसर्स, ये लिखवाऊंगा अभी. व्हाई वाज औरंगजेब्स सक्सेसर्स blamed for disintegration of the empire. सर इसके पॉइंट्स बता दें. जी बताता हूं जी. अच्छा लिखना शुरू करें जी. Aurangzeb ruled the empire for the longest time, for almost 50 years. Aurangzeb ruled the empire for almost
50 years या longest time. He came to the throne at the age of 39. And died at the age of 89. लॉन्गेस्ट टाइम से आगे क्या है? During this time, he could not focus on developing administrative skills. Focus on developing नहीं he could not focus on developing administrative skills of his offspring या sons कह लो, offspring या sons, who were skills, who were poor administrators. And after the demise of Aurangzeb, were incapable to handle the pressure of the सर प्लीज empire, इसी दो लाइन रिपीट कर दें. who were incapable to handle the pressure of the empire Number 2 reason. Secondly, due to long costly wars of Aurangzeb, due to long costly wars of Aurangzeb, financial inefficiencies were getting grim. Swear. Financial inefficiencies were getting grim, and it was difficult. Inefficiencies. And it was difficult to govern. Efficiencies were getting grim, and it was grim. Grim, yaar. Financial inefficiencies were getting grim, and it was difficult for the rulers to introduce welfare-based programs for the commoners. For the commoners. Commoners कहते हैं layman को, आम आदमियों को. And this instilled INSTILLED, this instilled hatred of the rulers. Instilled hatred of the rulers among the commoners. Third reason came, moreover, among the commoners. Third, moreover, but rulers among the commoners. Moreover, arrival of the British was another reason. Arrival of the British
बेटे तुम जरा उठ जाओ एक जगह से, उठो तो उठ जाओ, आ गया आ गया, जल्दी जल्दी आ गया, जल्दी आ गया। एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हो तो दोनों ही काम खराब हो, जल्दी से आ गया हो, जल्दी से। Moreover, arrival of the British was another important reason for the downfall of the Mughals, who started signing, British started signing treaties of friendship with the local Nawabs, giving them immense power and trust, to stand against the Mughals. This way, they weakened the Mughals by even alluring and bribing. This way, they weakened the Mughals by alluring and bribing these zamindars. Zamindars and mansabdars. This way, they bribed and allured zamindars and mansabdars. They allured and bribed zamindars and mansabdars to rebel. REBELL, rebel against the rebel क्या मतलब होता है? बगावत करना. Rebel against the REBELL, rebel against the REBELL, or single L, REBEL, rebel against the Mughals. जी, next लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी एक्सप्लेन कर दें प्लीज. ये आ गया आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर का. ठीक है जी. अब इन शॉर्ट अगर बताऊं तो 3 रीजन मेन आपने याद रखनी है मुगल इनएफिशिएंसीज की क्या थी. नंबर 1, आपको सोचें कि एक बादशाह जो 39 इयर्स की एज में किंग बना, वो 89 इयर्स की एज में उसकी डेथ होती है. 50 कांस्टेंट इयर्स ही वाज द वन हु वाज रूलिंग, और इन 50 सालों में उसके अपने बच्चे जो थे. अब एक बंदा जो 89 उम्र की ईयर में उसकी डेथ हो रही है, तो उसका अपना बच्चा कितने साल का होगा? कम से कम 60. ठीक है. किंग जो था उसका बच्चे 60 इयर्स के थे, विच वर ऑलमोस्ट ओल्ड. ठीक है. जैसे अभी ये किंग अब्दुल्ला मरा है, तो उसके पीछे जो किंग सलमान बना है, वो सारे कौन है? वो सारे के सारे बूढ़े लोग हैं. 60 70 साल के बाबे हैं. क्यों है? क्योंकि खुद जो किंग है वो बड़ी लेट उम्र में जाके मर रहा है. तो अगेन 89 इयर्स की एज में किंग मरता है. उसके जो अपने बच्चे थे, वो जाहिर बात है वो तो बादशाह के बेटे थे, तो दे वर द प्रिंस, सो दे वर इन लग्जरीज. ठीक है. एंड दे वर नॉट एक्सपोज टू एडमिनिस्ट्रेशन. और उस जमाने में जो क्लेवर लोग थे वो तो ब्रिटिश, वो आ चुके हुए थे. एंड दे वर अवेयर कि दे आर द रस्टिक पीपल. रस्टिक का मतलब होता है गवार, जाहिल लोग हैं. ठीक है. And they were not aware of the advanced technologies. ठीक है. तो they started improvising new techniques and technology. कौन सी new technique थी? Number 1, they came up with bribery. ठीक है. उन्होंने bribery की, treachery की. वो इस्लामियत ही लाई जा रहे हो, पाकिस्तान स्टडी लानी है. ये इस्लामियत है, पाकिस्तान स्टडी चाहिए. What is going on? Sunny was there. नीचे फोटोकॉपी पे सनी है कि कोई और है?
वैसे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैंने शरीफ आदमी को भेजा था कि शायद कोई काम सही होगा, वो सारे इस्लामियत के नोट्स भिजवाई जा रहे हैं, वो आगे पीछे जितने भेजे उतने आज वो भेजी जा रहे हैं। अच्छा चलो तीसरा फैक्टर जो था उसमें इन्वॉल्व हुआ वो था उनका मुगल्स का जो अपना अपना स्टाइल था। ठीक है, दो के औरंगजेब ने मरने से पहले प्रिंस मोअज्जम को, हिज ओन सन, उसको उसने डिक्लेयर किया था कि ही विल बी माय सक्सेसर, ये मेरे बाद किंग होगा। बट दिस किंग गॉट किल्ड विद इन 1 year's टाइम। और फिर ये भी टाइम आया कि देयर वर 12 रूलर्स हु यूज्ड टू क्लेम देमसेल्व्स रूलर एंड बिकॉज देयर वाज नो सक्सेशन रूलर। लिखें ये भी, इसी की लाइन में ऐड कर दें आखिर में। हाँ वही बता रहा हूं ना, वही बताने लगूं। Hence there was no succession law, hence there was no succession law, in the absence of which, in no succession law, in the absence of which the self-proclaimed prince, the self-proclaimed prince had to fight with each other, weakening their own army and strength, weakening their own army and strength, became major reason for the fall of Mughal dynasty. ठीक हो गया? अगेन वो लॉन्ग कॉस्टली वॉर्स में आ जाएगा। ठीक है, मराठा फैक्टर जो थे वो सेंटर में भी और दक्कन में भी, दो जगह से वो तंग कर रहे थे मुगल को। लिख सकते हैं इसको, लेकिन अगेन आपने सिर्फ लॉन्ग कॉस्टली वॉर्स लिख दिया ना तो वो बहुत है। आप टू द पॉइंट बात करें बजाय इसके कि आप इसको और एक्सपैंड करते चले जाएं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मुगल से रिलेटेड, यही 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इस पर 14 मार्क क्वेश्चन जो है वो अभी आपको मिल जाएगा, प्रिंटेड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, मराठास वाला। अब आते हैं EIC की तरफ, इस पे जरा क्वेश्चन बैंक लिखते जाएं। व्हाट वाज EIC? व्हाट वाज EIC? अभी वो सारे लिखवाऊंगा। ये लिखवाया था, व्हाई वाज औरंगजेब्स सक्सेसर्स ब्लेम्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब आप लिखेंगे व्हाट वाज EIC, 4 मार्क्स। जी वो भी लिखवाता हूं, अभी सवर करते जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी लिखें जी, 4 मार्क क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा अब आपको साथ क्वेश्चन बैंक पे लिखवा लें। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैं क्वेश्चन जब चेक करता हूं तो क्वेश्चन आता है व्हाट वाज EIC, तो हम क्या कर रहे होते हैं, पहले लिखते हैं EIC मींस ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर वो आगे एस्टैब्लिश कब हुआ और सारा कुछ लिख रहे होते हैं। आपने डायरेक्ट लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी, बस उसको डी एब्रीवेट कर दिया डायरेक्टली, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी after getting permission from the Queen of England came to India in 1600 as traders. 1600 as traders. In 1600 as traders. But they formally started their trade when they landed in Surat in 1608. सूरत आज भी इंडिया की सबसे बड़ी कॉटन इंडस्ट्री है। जैसे हमारे मुल्क में जब कॉटन की बात की जाए कौन से शहर का नाम आता है? फैसलाबाद। इंडिया में अगर कॉटन की बात की जाए तो सूरत। ठीक है, दे लैंडेड इन सूरत इन 1608। जी एज ट्रेडर्स they landed in but they in formally Surat. They formally started their trade when they landed in 1608 after seeking permission from the then governor of Gujarat,
शाहजहां, permission from the then governor of Gujarat, Shahjahan. जी, they chose India as an alternate to East Indies. ये West Indies नहीं है. They chose India as an alternate to East Indies, as Dutch had already taken control over spice trade there. Silk, cotton, sugar, and spices. Silk, cotton, and sugar and spices were the main attraction of the British to come to India. In 1664, they had set up their 1664, they had set up their presidencies, trade presidencies in the port cities of India. Set up their trade presidencies in पोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया. वो कौन कौन से थे? मद्रास, कैलकाटा, मुंबई था उस जमाने में. ओके जनाब, ये समझ आ गई. इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं आपको. हुआ ये था कि 1600 में क्वीन से परमिशन लेने के बाद they started coming to India and they came here in disguise of traders. They were there, and when they came here they found out that this was a time when industrial revolution was taking place in Europe, and whole of the European nation they were out to hunt for the cheaper resources. की जंग चल रही थी और फ्रेंच भी थे, डच भी थे, ब्रिटिश भी थे. They all were looking after the cheap resources because they had to produce in bulk. ठीक है, और cheaper चाहिए था. So they went to East Indies. East Indies was Indonesia at that time. आज का Indonesia was known as East Indies. ठीक है. ब्रिटिश में 3-4 चीजों की बहुत सख्त कमी है. कॉटन खरीफ क्रॉप है. ज्योग्राफी भी साथ साथ पढ़ा दूं आपको. कॉटन खरीफ क्रॉप है और समर में उगती है. ब्रिटेन में भी समर नहीं आता है. ठीक है, और फ्रांस में भी समर नहीं आता है. ठीक है, तो ये ऐसे मुल्क हैं जहां पे इनको कॉटन के लिए दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और हमारे जैसे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. आपको पता होना चाहिए कि ये खित्ता जिसमें हम बैठे हुए हैं, इट यूज्ड टू प्रोड्यूस अबाउट 3rd वर्ल्ड्स बेस्ट कॉटन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड. दुनिया की 3री बेस्ट प्रोडक्ट हमारे मुल्क बनाता था. ठीक है, आजकल पहला जो है वो अब थाईलैंड है. नहीं, बांग्लादेश सिर्फ रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करता है. इस जमाने में इजिप्ट था. अच्छा खैर, अब इजिप्ट दूसरे नंबर पे. अच्छा जी, फिर ये तो कॉटन हो गई. दूसरी बात, ब्रिटेन के अंदर जो चीनी बनती है वो टर्निप से बनती है. ठीक है, वो टर्निप से चीनी बनाते हैं. वहां शुगर केन नहीं उगता. शुगर केन इज अगेन खरीफ क्रॉप. अगेन वहां सर्दी होती है, गर्मी नहीं होती है. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी वो मार खाते हैं. उनके पास शुगर केन नहीं है. शुगर केन वो यहीं से, इनफैक्ट अमेरिकन भी यहाँ से ही शुगर केन का प्लांट लेके गए थे और अमेरिका में लगाया था. तो यहाँ से ये सब कॉन्टिनेंट से गया था. ठीक है, तो शुगर उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी. यहाँ पे तो प्लेंटी में पैदा होती थी. ठीक हो गया, तो ये भी एक चीज थी. फिर स्पाइसेस. इंडिया के स्पाइसेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पता है ना आपको. ठीक है, इंडिया के स्पाइसेस पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं. आज भी हैदराबाद की मिर्च जैसा कोई मिर्च नहीं बना सका, ऐसी कड़वी मिर्च. ठीक है, तीखी मिर्च जिसको कहते हैं, तो वो
हैदराबाद में उगती है। इस तरह और बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं हमें तो पता ही नहीं है ना। आप कैश्यू नट के बारे में तो जानते होंगे, कैश्यू नट। वो तमाम लोग जो इंडिया से हैं और जो अगर कभी दुबई पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो तामिल जो लोग आते हैं, जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं, वो अपनी हर डिश के अंदर कैश्यू नट डालते हैं। और हम तो तरस तरस के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैश्यू नट इज वेरी कॉस्टली हियर, बहुत महंगा है। लेकिन साउथ इंडिया में हर डिश के अंदर वो पड़ता है। वो तो चटनियां बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुदीना की मिंट की चटनी बनती है ना, वैसे वहाँ इंडिया साउथ इंडिया के अंदर उनकी चटनियां बनती हैं। अच्छा खैर, काजू जिसको बोलते हैं, समझ आती है ना काजू की। सो ईस्ट इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी वो थी अचीवमेंट कि उनको इंडिया जैसा मुल्क मिल गया जो कि रिच था कॉटन से, स्पाइस से, ठीक है। और तीसरी बड़ी चीज थी, शुगर भी यहाँ पे थी। फिर एक और चीज भी थी, वो थी चाइना की तरफ ट्रेड रूट। नाउ चाइना वाज अनदर अट्रैक्शन। व्हाई इट वाज अट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ एन ओपियम ट्रेड। ओपियम वाज अनदर अट्रैक्शन फॉर द गोरा। गोरा जो है ना, वो सारा वक्त मौफ रहना चाहता है, दिमाग को बेहोशी की हालत में इंटॉक्सिकेट रखता है अपने दिमाग को, ठीक है। ओपियम इज अ रॉ मटेरियल ऑफ ए हेरोइन। हेरोइन उससे बनती है, फिल्मों वाली हेरोइन नहीं, द हेरोइन विच एक्चुअली मेक्स यू एडिक्ट, ठीक है। तो अगर आप किसी गोरे से बात करें तो यूल फाइंड आउट हर गोरा किसी ना किसी एडिक्शन का मरीज है। या वो अल्कोहल पिएगा या वो marijuana पिएगा। वैसे तो marijuana आजकल हमारे इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी लीगल करवाने की ठान ली है, तो अनकरीब सारे ही marijuana पिया करेंगे। हाँ, ये क्या चीज है बेटे? आई एम नॉट योर डिक्शनरी, कंसल्ट द डिक्शनरी प्लीज, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज इट्स नॉट योर एज टू नो दीज वर्ड्स। हाँ, लीगल हो गई है। वो कह रहा है कि जी marijuana उगानी चाहिए हम सबको पाकिस्तान में भी, ताकि हम बाहर के मुल्क में भेजें। तो 1990s में जब अफगानिस्तान पे क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूं, तो 1990s में व्हेन अफगानिस्तान पे अमेरिका आ गया और उसने अफगानिस्तान के तमाम रास्ते बंद कर दिए, तो अफगानिस्तान ने कहा ओके, ऐसा नहीं तो हम फिर दूसरा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वाइट गोल्ड भेजते हैं पूरी दुनिया को और उससे पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनके तमाम वो जो फंड्स थे वो फ्रीज कर दिए गए। सो दे स्टार्टेड सेलिंग वाइट गोल्ड। इन 2001 हेरोइन के 1 किलो पैक की कीमत $6,000 थी। हेरोइन के 1 किलो पैक की कीमत $6,000 थी, ठीक है, 2001 में। अभी तो अब तो हेरोइन पीने वाला को मिलेगा ही नहीं ना आपको, वो सिर्फ गोरे पी सकते हैं क्योंकि वो डॉलर्स में पे कर सकते हैं। गरीब आदमी डॉलर, वो गंदी शंदी चीजें पीता है, वो हेरोइन नहीं पी सकता। सो ओपियम ट्रेड वाज अनदर अट्रैक्शन फॉर द ब्रिटिश, एंड दैट वाज कहां से हो सकती थी? चाइना से, जो कि सब कॉन्टिनेंट में से गुजर के जाना था। फिर चाइनीज सिल्क वाज अनदर। आपको पता है एक इंडियन सिल्क आता है और एक चाइनीज सिल्क आता है। ये अभी शिवाज क्या नाम है उसका, हमारी लीडर क्या नाम है उसका, मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ के बेटे ने ना, मेरी लीडर मरियम नवाज शरीफ के जो बेटे हैं ना, उन्होंने जो शॉल पहनी हुई थी ना, वो 70 लाख की थी। शातूश की जो शॉल है, वो कश्मीर में शातूश एक परिंदा है बड़ा मशहूर, अब तो खैर वो रेयर हो चुका हुआ, वो उसके परों से बनती है और वो इतनी सॉफ्ट और इतनी जबरदस्त है कि उसको आप सुई के सुराख में से गुजार सकते हैं। इट इज सेड अबाउट इट कि इतनी सिल्की है। यस, सेम वे चाइना का जो सिल्क था ना, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेलिकेट एट दैट टाइम, एंड इट वाज वेरी फेमस वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में। सेकंड, चाइना की एक और चीज बड़ी मशहूर थी, डायनामाइट, बॉम्ब्स। या आजकल जितने पटाखे आते हैं ना, फुलझड़ियां पटाखे, ये सारे चाइना ने शुरू किए थे। वो अपने, हाँ, तो वो न्यू ईयर पे यूज किया करते थे। तो पूरी दुनिया उनके डायनामाइट की बड़ी फैन थी। एंड द बॉम्ब्स एक्चुअली bomb technology actually initiated by the Chinese. So it was another attraction कि वहां से ये चीजें लेके आएंगे। और आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर रहा है बंगाल का, he got killed because of the addiction जो उसने ओपियम ट्रेड की वजह से उसको मिल गई थी। तो he was involved in opium trade, ठीक है, तो वो इसी चक्कर में था, उस पर करप्शन के एलिगेशन लगे थे। खैर अला बला। अच्छा जी, बेटे तो इससे निकला, तेरी उम्र नहीं अभी। हाँ, इंटरनेशनली बैन नहीं रहा बेटे, आप जाके चेक करें आजकल। आप अमेरिका में तो इट्स लीगल, इट्स द मोस्ट बिकने वाली चीज बन गई है अमेरिका। इट इज सोल्ड लाइक, इंटरनेशनली बता रहा हूँ, इंटरनेशनली इट्स लीगल। दे कंसिडर इट के
उन असल में गोरे का दिल करता है जो चीज लीगल कर देता है, जो चीज उनको फील। हाँ मैंने की नहीं इस्तेमाल, आई डोंट नो। हाँ हाँ ओके। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई वाज ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अट्रैक्टेड, ये भी इसी का पार्ट है। अगेन जो हमने ये पॉइंट लिखे हैं इसी को जरा एक्सपैंड करके लिखना है, सिंपल इसलिए बता रहा हूं। व्हाई वाज ईस्ट इंडिया कंपनी अट्रैक्टेड, 4 मिनट रहते हैं, 7 मार्क्स का, वाई से शुरू होने वाला 7 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे। वाई वाज EIC अट्रैक्टेड या इन्वॉल्व इन इंडिया। पहले रीजन लिखवाता हूं फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगा। वैसे तो एक्सप्लेनेशन बनी बनाई लिखवाई भी है, वो अभी तक हैंड आउट ही नहीं आए, वो इस्लामियत भेज जाए, कोई बात नहीं, इसलिए रीजन लिखवा रहा हूं। नंबर 1, alternate to East Indies as Dutch had already established there. Alternate to East Indies as Dutch had already established their control over East Indies. Second reason, establish their control, तो स्लो बड़ा बेटे, आयोडीन मिला नमक पिया कर। over East Indies. Second reason, ऑनलाइन आजाद सुन रही है ना मेरी आवाज? म्यूट तो नहीं हुआ मैं? Yes, sir. ओके ग्रेट। अच्छा सेकेंड रीजन, silk, cotton, spices and sugar. Silk, cotton, spices and sugar were the main attraction for the industry of the British. Attraction for the industry of British. Third, cheap raw materials. तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। Cheap raw materials as West was hankering, 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 आरजू करना, भागना, as the West was hankering after the resources which were readily available in India, to feed their industries, Next, trade route to China, especially the opium trade, and dynamites, OPIUM, opium, and the dynamites were another attraction for the British to reach to the land which was known as Golden Sparrow, Yeah. Golden Sparrow, which was known as Golden Sparrow. नहीं, next लिखवा रहा हूं. This land was known as Golden Sparrow for the British. The ignorance
and rustic nature of the people allured British, and ignorance of the people allured British to come and take over. Excuse me, sir. Less than 1 minute is left, तो आप यहीं रुक जाएं. हमारा खत्म हो चुका है, तो हम लोग कैसे आपका लिखेंगे वक्त दोबारा? खत्म हो चुका है, इसके बाद फोर्थ हो जाना है. Yes, sir. ओके 30 seconds रह गए. Meeting 30 fourth हो seconds. जाएगी. बस ये एक लाइन लिख लो जल्दी से. Allured Okay. to British to take over these lands as rulers because of the absence of the succession rule, the succession law, the kings were busy fighting with each other, hence making weaker. ठीक हो गया?